Dear students, welcome to you in sixth lecture of metals and non-metals. Their topics are electron dot formula, stable and opted configuration, formation of ionic compounds, and properties of ionic compounds. First we go electron dot formula. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 9th में पढ़ा रखा हुआ है हाउ यू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स विद इन एन एटम. क्लियर? जैसे कि ये है हमारे पास में यू राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. यू नो number of electrons in magnesium equal to its atomic number 12. When you distribute number of electrons according to Borbély's rule, the configuration will be 2, 8 and 2. The first cell you know called K shell, this is L shell, this is M shell and so on. First, second, third shell. Third shell contains only 2 electrons. This shell is also called valency shell and these electrons are called valency electrons. तो हम लोग किसी भी एलिमेंट के यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए क्या करते हैं, उसके सिंबल के ऊपर जो है साइड में या कहीं पर भी हम लोग ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट को डॉट से शो कर देते हैं एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला. क्लियर? आइए इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग जान लेते हैं. इसके लिए पहले हम लोग फर्स्ट जान लें. हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा वैलेंसी शेल एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ये आपका 9th क्लास का है. एटम इज कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी शेल सॉरी, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. In other words, we can say valency electrons are electrons present in outermost orbit. Clear? Yeah. Now, what is the electron dot formula? अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डेफिनेशन चलेगी इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला की. How you define it? Electron dot formula. Number of electrons present in valency cell, that is called outermost shell, are shown by using dots, that is dots around symbol of an atom oblique ion. Clear? Yeah. This representation is called electron dot formula. Clear? For example, in sodium you know atomic number is 11,
So their outermost electron is only one. Tick. There only one electron is present in the outermost orbit in the third shell. Tick. So what will be its electron dot formula? The electron dot formula of sodium is, क्या होगा? इसका सिंबल लिखेंगे और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट बना देंगे. So it is a electron dot formula of sodium. In the same way, for magnesium, their configuration is 282. So outermost orbit contains 2 electrons. So you write 2 dots around the magnesium. In the same way, chlorine has 2887. This outermost orbit contains 7 electrons. So you give 7 dots around the chlorine. It is electron dot formula of chlorine. In oxygen, configuration is 2,6. Outermost orbit contains only 6 electrons. So use 6 dots around the oxygen. In this. Clear? In the same way, जैसे chlorine ये है, if you write dot formula for chloride ion, so chloride ion has how many electrons? 18, because it gains 1 negative charge. That means it takes 1 electron. ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा आपका? सॉरी, ये 287 है आपका. क्लियर? यहाँ 288 हो जाएगा आपका. 28, इसको ध्यान दीजिएगा, 287 था, 2 के पहले हो गया था. 288 हो जाएगा बिकॉज इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. कहाँ लेगा? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में. तो क्लोराइड आयंस के लिए देखें हम लोग, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स. 8 इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयंस. दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला. क्लियर? ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है. Now, stable and octet configuration. Clear? Can exist maximum 8 electrons in the outermost orbit, and presence of 8 electrons in the outermost orbit is called octet configuration. It is highly stable configuration. Clear? Presence of 8 electrons in the outermost orbit means shell. In the outermost orbit is called octet configuration. Clear? It is a highly stable configuration. Clear? Helium has 2 electrons only present in first shell, first orbit. It is also a highly stable configuration. Clear?
such elements are chemically inactive, and these are noble gases. Example, all noble gases have stable configuration. In the noble gases like helium, neon, these are atomic number, krypton, argon, चलिए इनको ऊपर लिख दे रहे हैं. They are helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These all have stable configuration. These are chemically inactive. The helium has only 2 electrons in the outermost shell. Neon has 10 electrons, that is 2 8. Outermost orbit contains 8 electrons, octet configuration. Argon has 2 8 8. This octet configuration. Krypton 2 8 18 8. It has also 8 electrons in the outermost orbit. Same in the xenon and radon also. ध्यान रखें. अब इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, they have not stable configuration. Such configuration is called unstable configuration. ठीक. Other elements except noble gases have not stable configuration. ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल हम लोग मेटल्स में देखें, ठीक है, like lithium, sodium, magnesium, aluminum, potassium, calcium, etc. You see, for lithium has 3 electrons, it has not octet configuration. Sodium has 2 8 1, and magnesium has 2 8 2, and so on. You can write for other elements configuration. Clear? And also there are non-metals. Examples, non-metals. Non-metals में भी ऐसे ही है, like nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur, chlorine. For nitrogen has 7 electrons, atomic number 7. Tick, outermost orbit contains 5 electrons, not octet is completed. In the same way, oxygen has 2 6. Phosphorus has 15 electrons, 2 8 5, and so on. अब ध्यान दें, जिनके पास ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो अपने नियरेस्ट एटम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? फॉर विच दे आर 2 मेथड्स. ये जब गेन करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो दे आर 2 टाइप्स. ठीक है ना? 2 प्रकार हैं. एक है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे. तो
आइए चलते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर? इसमें क्या होता है, when a highly reactive metal combines with a highly reactive non-metal, then metallic atom loses electrons and non-metallic atom gains electron. Clear? And make a compound is called ionic compound, or also called electrovalent compound. Clear? ये यहाँ पे जो आपका मेटल एटम है, it becomes positive due to loss of electron, and non-metallic electrons becomes negative. Metallic atom becomes positive and non-metallic atom becomes negative. Clear? ये नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, और इनके बीच आपके इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएंगे। उस फोर्स को कहेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन such positive and negative particles electrostatic attraction force is developed, known as ionic or electrovalent bond. We see formation of some compounds. Clear? Like example, we see formation of sodium chloride. Clear? You know, in the sodium, atomic number 11, configuration 281. In chlorine, 287. For completing octet configuration, it loses one electron easily. इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. And it can gain one electron easily
by which the 7 electrons becomes 8 and octet is completed. ठीक, यहाँ क्या होगा? Sodium loses 1 electron which is gained by chlorine atom. Clear? How? See here. First you write dot formula of electron. They are only one. 281 configuration is present. And chlorine has 7 electrons in the outermost orbit. Clear? This is electron dot formula. When they combine, what happens? This electron is transferred to chlorine, loses by this electron sodium and gained by chlorine atom. Then what happened? In the outermost shell of chlorine becomes 8 electrons. ठीक? Due to loss of 1 electron, it gains positive charge. And due to gain of 1 electron, it gains negative charge. ठीक? The sodium chloride is formed. Now we go for same way for magnesium chloride. Magnesium chloride, MgCl2. Hence, magnesium has 2 electrons in the outermost orbit in the same way. ठीक, क्या होगा? It can lose 2 electrons. इसे 2 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे for completing octet. And chlorine gains only 1 electron. ठीक, because you know magnesium has 282 and chlorine has 287. ठीक है, ये कंडीशन है. तो it requires only 1 electron. ये तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा. क्या होगा? There are 2 chlorine atoms take part in this way. Their configuration is in this way. And so 1 electron of magnesium is transferred to 1 chlorine atom and other electron transferred to another chlorine atom. So what happens? Magnesium got positive charge 2 plus. Plus in it 2 plus because it loses 2 electrons. And chlorine, 1 chlorine atom gains 1 electron. Clear? You have 2 chlorine atoms, so you can write 2 in this way. In the same way, for sodium oxide. Sodium oxide. You know sodium has 281 configuration and oxygen has 26 configuration. Their sodium atom has only 1 electron and oxygen has 6 electron in the outermost orbit. It requires 2 electron for completing octet and it is able to give only 1 electron. तो 1 electron इसके पास कहाँ से आएगा? So there are 2 sodium atoms take part in formation of sodium oxide. 1 electron given to oxygen by each sodium atom, and thus in oxygen octet is completed because oxygen gains 2 electrons, 1 by each sodium, so it gains 2 negative charge, and 1 sodium
loses one electron, it gains one positive charge. Same phenomena occur in the two sodium atoms. So you can write in this way. This is sodium oxide. In the same way, in the formation of magnesium oxide. Magnesium oxide. Magnesium oxide, you know magnesium's configuration 282, in oxygen has 26. So magnesium requires loss of 2 electron and oxygen requires gain of 2 electron for completing octet. So what happens? 2 electrons given by magnesium to oxygen. So magnesium loses 2 electrons. So it has 2 positive charge and oxygen gains 2 electrons. So it has 2 negative charge in this way. Now we go properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Clear? We go first number, physical state. Physical state. ठीक, ये सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं. ठीक, these are solid compounds. और इनमें क्या होता है? कैटायंस एनायंस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्ट अनायंस होते हैं और वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं. ठीक, ये सॉलिड इन विच कैटायंस and anions form a network. Clear? एक नेटवर्क के रूप में ये आपके होते हैं. These are generally hard. जैसे NaCl है, आप देखते हैं हार्ड कंपाउंड है. ठीक है, ये और ब्रिटेल होते हैं. क्लियर? और कैटायन एनायंस एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं. कैटायंस एंड एनायंस bind together by attraction forces. क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, attraction forces. Now we go melting point and boiling point, second property. Melting point, that is MP, and boiling point ध्यान रखें, यहाँ कैटायंस एनायंस एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. ठीक है, a large amount of energy is required to break strong attraction force between cation and anion. So melting point and boiling points are high. Clear? अब बात करते हैं solubility की. ठीक,
तो ध्यान रखें ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. These are soluble in water but insoluble in kerosene oil, benzene, etc. In the same way, we go another point, conduction of इलेक्ट्रिसिटी. ध्यान रखें सॉलिड स्टेट में इनके कैटायन्स बंधे होते हैं, सो देयर नो इलेक्ट्रिक कंडक्शन. दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट. ठीक, due to fixed position of cations and anions. But electric conductor in molten state or in aqueous solution due to movement of ions. ओके, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में.